Good evening, you're watching the prime time on Hornbill TV. Let's have a look at the news headlines. Republican candidate Donald Trump is set to become the 47th United States president after the greatest political comebacks in American history, defeating his Democratic rival Kamala Harris in bitterly fought polls. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu fired his defense minister Yoav Gallant, citing lack of trust, Times of Israel reported. The Jammu and Kashmir Assembly on Wednesday passed a resolution asking the centre to hold talks with elected representatives for restoration of Article 370, which grants a special status of the Union Territory. Amid the ongoing tussle between Mahayuti allies over seat sharing, Bharatiya Janata Party on Tuesday expelled 40 leaders and office bearers across 37 assembly constituencies for going against the party line. In Bangladesh's port city of Chittagong, a clash between the Hindu community and the law enforcement forces took place in the midst of a tense situation over a Facebook post criticizing ISKCON. Let's have a look at the news in detail. Republican candidate Donald Trump on Wednesday won the U.S. presidential elections for a second term in one of the greatest political comebacks in American history, defeating his Democratic rival Kamala Harris in bitterly fought polls. With results continuing to come in from various states giving a clear indication of a Trump victory, the 78-year-old Republican leader addressed his supporters at West Palm Beach in Florida, declaring victory and promising a golden age of America. Our country has never seen before nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And to every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh, Trump, who was backed by billionaire Elon Musk, exited the White House 4 years back after losing the elections to Democratic rival Joe Biden in 2024. He will be back in the White House after securing a landslide victory, proving his critics wrong. Trump served his first term as U.S. president from 2016 to 2020 after defeating Democratic rival Hillary Clinton. His second term seemed quite improbable due to his controversial exit in 2020 and a series of legal troubles earlier this year. However, the billionaire businessman made a remarkable comeback and is set for his second innings in the White House. Donald Trump won the North Carolina swing state in the early projections and maintained a close lead in all other key states like Pennsylvania, Wisconsin, and other swing states as well. In Georgia, Trump made a striking comeback, reclaiming the crucial battleground state that slipped from his grasp in 2020. With this victory, he solidified his position, and the turnaround gave a significant boost to the Republican Party as they moved closer to a win. As Trump made a dramatic return, the global leaders extended their wishes to the 47th U.S. president-elect. From Prime Minister Narendra Modi to Ukrainian President Volodymyr Zelensky to British Prime Minister Keir Starmer, congratulatory messages started emerging on social media. Prime Minister Modi congratulated friend
Donald Trump on his historic presidential polls victory and said that he looks forward to renewing their collaboration to further strengthen the India-US comprehensive global and strategic partnership. The Union Cabinet has approved a new scheme, PM Vidya Lakshmi, targeting middle-class students who wish to get admission into higher educational institutions but face financial constraints. Any student who secures an admission to higher education institutions and wishes to avail education loans to pursue higher education in these institutions will be eligible to get the loan through the PM Vidya Lakshmi scheme. Such loans will be collateral-free and guarantor-free, Union Information Minister Ashwani Vaishnaw informed reporters after the cabinet meeting. A maximum of 1 lakh students each year will be covered under this scheme. A student having annual family income up to rupees 8 lakh shall be eligible to get 3% interest subvention for education loans up to rupees 10 lakh. This is in addition to the full interest subvention already offered to students with up to rupees 4.5 lakh annual family income. The government said that no meritorious students will be denied of higher education due to financial constraints. The Department of Higher Education will prepare a list of high-quality institutions every year that will include top 100 rank institutes in the overall category specific and or domain-specific rankings in NIRF, plus top 200 rank HEIs of the state and UT governments in NRIF, plus all remaining HEIs under Government of India. Loan applications shall be processed for approval, monitoring and dispersal through the PM Vidya Lakshmi portal. Loans up to rupees 7.5 lakh shall be eligible for a credit guarantee of 75% of outstanding default. इसके बाद में एक सेकंड बहुत बड़ा आज फैसला लिया गया है हमारी मिडिल क्लासेस के लिए और यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना। आप सब जानते हैं कि मिडिल क्लासेस के लिए जो रेलेवेंट इंफ्रा है, जैसे मेट्रो सिस्टम्स हैं, जैसे नई तरह की ट्रेन्स हैं या नए एयरपोर्ट्स छोटी छोटी शहरों में भी बनाना, ये एक लंबा प्रोसेस 10 साल में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए मिडिल क्लास के बेनिफिट्स के लिए। आज एक नई स्कीम अप्रूव हुई है, फुल्ली सेंट्रल स्कीम है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम, दिस स्कीम बेसिकली एम्पावर्स द यूथ एंड मिडिल क्लास। कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट जिसको अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिला हो, वो वंचित न रहे जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ये इसका उद्देश्य है। हर एक छात्र, एवरी स्टूडेंट जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, अगर उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है और अच्छे यूनिवर्सिटी में या अच्छे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन हुआ है, तो वो वंचित न रहे। इस उद्देश्य के साथ उसे गारंटी रहे कि उसको फाइनेंसिस के कारण पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है फ्रेंड्स, एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। हम में से बहुत लोगों की लाइफ्स में इस तरह के हमने खुद की लाइफ में देखे होंगे, हमारे मित्रों के लाइफ में देखे होंगे, हमारे परिचितों के लाइफ में देखे होंगे, जिसमें फाइनेंशियल कंडीशंस के, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन के कारण बहुत होनहार बच्चे कई बार हायर एजुकेशन से वंचित रहे। तो पीएम विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत एक बहुत सिंपल, ट्रांसपेरेंट मेथड से कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली है अगर, तो उनको एक अच्छे इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मिलेगा। और जिस तरह से पीएम जनधन योजना एक बहुत ही प्रॉपर सिस्टम में डिजिटल माध्यम के जरिए से इंप्लीमेंट हुई, वैसे ही पीएम विद्या लक्ष्मी भी एक फुल्ली एंड टू एंड डिजिटल मीडियम से, डिजिटल पोर्टल के थ्रू इंप्लीमेंट होगी। एब्सोल्युटली हैसल फ्री एप्लीकेशन बनेगी, शायद 2-1 पन्ने का बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होगा
और वेरिफिकेशंस हम जानते हैं ऑलरेडी डिजी लॉकर और बहुत सारी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं और कई सारे स्टेट के एजुकेशन बोर्ड्स ऑलरेडी डिजी लॉकर के साथ जुड़ चुके हैं. सो in a sense, a very simple and very student-friendly and transparent system will be developed so that no student is ever denied of good education. और हम सब जानते हैं, हम सब जो मिडिल क्लासेस से आए या लो इनकम बैकग्राउंड से आए हैं, we all know that education is a very important factor by which we can come up in life. Time for a short break. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी यारो संग है फ्रीडम सारी फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ लाइफ माने एंजॉय राइड एक्टिवा 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 स्कूटर ले एक्टिवा स्कूटर बोले तो एक्टिवा. जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा. वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं. उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है. वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले. ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है. लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं. आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी यारो संग है फ्रीडम सारी फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ लाइफ माने एंजॉय राइड एक्टिवा 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 स्कूटर ले एक्टिवा स्कूटर बोले तो एक्टिवा. जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा. वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री Welcome back after the break. Let's have a look at more news. In a significant change for aspiring engineers, the Joint Entrance Examination Advanced has updated its eligibility guidelines, impacting the number of attempts, age limit and Class 12 criteria. These changes offer candidates more flexibility in pursuing the goals of securing a seat in India's premier engineering institutions. The number of attempts for JEE Advanced has been increased from 2 to 3, giving students 3 consecutive years to qualify. This change provides more time for candidates to refine their preparation, reducing the pressure to succeed within just 2 attempts. The updated rule is effective for all new candidates from 2025 onwards. For JEE Advanced 2025, candidates must have been born on or after October 1, 2000. For candidates belonging to SC, ST or PWD categories, a 5-year relaxation is applied, allowing those born on or after October 1, 1995 to be eligible. This adjustment ensures a fair opportunity for candidates across various social categories.
This eligibility extension gives candidates flexibility while ensuring fairness in line with academic timelines. With this new structure, candidates have more time and opportunity to achieve their academic aspirations through JEE Advance. Thano, a village in Uttarakhand's Dehradun, has found a place in the world map as a writer village. With an aim to provide a calm environment in the lap of nature for the writers, the innovative village is the brainchild of literature, writer and politician, former Chief Minister of Uttarakhand and former Union Minister Ramesh Pokhriyal Nishank. At present, there are 12 writer cottages which have been built in 50 bigha area in this writer village. आगे क्या लक्ष्य है इसका? स्पर्श हिमालय फाउंडेशन का ये लेखक गांव देश का पहला लेखक गांव है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस लेखक गांव के जो 5 दिन का उत्सव 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक हुआ है और जिसका उद्घाटन देश के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल जी की उपस्थिति में, और बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार और फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी जी की अध्यक्षता में हुए इसकी शुरुआत में तमाम केंद्रीय मंत्री, राज्य स्तर के और देश और दुनिया के तमाम लोग उपस्थित हुए। लगभग 40 देशों के लोग लगातार उपस्थित रहे और 65 देशों के लोग इससे कहीं न कहीं किसी रूप में जुड़े हैं। देश के हर कोने से यहाँ पर 500 से भी अधिक साहित्यकारों ने 3, 4, 5 दिनों तक लगातार विमर्श किया है। हम लेखक के कुटीर बना रहे हैं, एक बड़ा पुस्तकालय है वहाँ पर जिसमें 1 लाख पुस्तकें पहले चरण में होंगी। अभी शुरुआत हो रही है, ऑडिटोरियम बन रहा है, लेखक अतिथि गृह का निर्माण हो चुका है, नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका और संजीवनी वाटिका जैसे बहुत ही आकर्षक जब पेड़ लोगों से बात करेंगे और उसके निदान करेंगे, ऐसा वो गंतव्य है रचनाकारों का। तो मुझे भरोसा है कि जो हर वर्ष ये 3 प्रकार के उत्सव होंगे, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे 3 प्रकार के शिखर सम्मान भी स्पर्श हिमालय फाउंडेशन ने देने की घोषणा की है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपको लेखक गांव थानो जो देश का पहला लेखक गांव है, आप सबको मैं वहां पर विनम्रता से आपको आमंत्रण देता हूं कि आप अपनी रचना को वहां पर एक दिशा देंगे और आपकी रचनाशीलता से न केवल इस देश बल्कि दुनिया के लोग लाभान्वित होंगे। Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu fired his defense minister Yoav Gallant, citing lack of trust, Times of Israel reported. Gallant, who was a long-time rival from within the Likud party, will be replaced by Israel's Foreign Minister Israel Katz. Minister without portfolio Gideon Saar will replace Katz as per Times of Israel. Times of Israel quoted a statement from the Prime Minister's office which stated that Netanyahu informed Gallant that his tenure as the defense minister would end 48 hours from the receipt of this letter. Netanyahu said in a video statement, although in the first months of the war there was trust and there was very fruitful work, during the last months this trust cracked between him and the defense minister. He says they disagreed on the management of the war and charged that Gallant made statements and took actions that contradict cabinet decisions. Netanyahu also accused Gallant of indirectly aiding Israel's enemies. The crisis of faith with the defense minister does not enable the proper continuation of the military campaign, Netanyahu said. Netanyahu also said that several cabinet and government members agreed with him that this cannot continue following the dismissal. Gallant said in a post on X that the security of Israel would always be the mission of his life. Gallant later elaborated that there were 3 reasons for his dismissal: the need to draft Haredi men to the IDF, the imperative to bring back the hostages from Gaza, and the need for a state commission of inquiry in the October 7 Hamas terror and resulting conflict. Meanwhile, protests erupted following the dismissal of Defense Minister Yoav Gallant. Protesters gathered on Tel Aviv's Ayalon highway, broke through security barriers and demonstrated outside of PM
Netanyahu's residents, expressing their anger. We'll be right back after a short break. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी यारों संग है फ्रीडम सारी फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ माने एंजॉय राइड एक्टिवा 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 स्कूटर ले एक्टिवा स्कूटर बोले तो एक्टिवा। Welcome back after the break. Let's have a look at more news. The Jammu and Kashmir Assembly on Wednesday passed a resolution asking the centre to hold talks with elected representatives for restoration of Article 370, which grants a special status of the Union Territory. Jammu and Kashmir Deputy Chief Minister Surinder Chaudhary moved the resolution for restoring the special status of the erstwhile state, which was revoked by the centre on August 5, 2019. That this Legislative Assembly reaffirms the importance of the special status and constitutional guarantees which safeguarded the identity, culture and rights of the people of Jammu and Kashmir and expresses concern over their unilateral removal. The resolution moved by Chaudhary said, the resolution added that the process of should safeguard both national unity and aspirations of the people of Jammu and Kashmir. An uproar among the treasury benches followed even as BJP members tore the copies of the resolution and threw the pieces into the well of the House. Assembly marshals stopped Langate MLA Sheikh Khurshid as he tried to rush into the well. Amidst the din, Speaker Abdul Rahim Radar put the resolution to vote, which was passed. As the chaos ensued, the House was adjourned for 15 minutes. Article 370 of the Constitution, which gave special status to Jammu and Kashmir, was abrogated by the Prime Minister Narendra Modi-led government. The move led to the bifurcation of erstwhile state into two union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. देखिए, जहां तक ताल्लुक है, जो रेजोल्यूशन हमने लाया है, ये कोई नई बात नहीं है। हमने क्या कहा है कि स्पेशल स्टेटस हमारा स्टेट हमारा जो छीना गया, जब 2019 में हमारा यहाँ से एक आदमी से लिखवा के आपने स्टेट भी तोड़ दिया, उसको यूटी बना दिया और हमारा स्पेशल स्टेटस था उसको भी तोड़ दिया। ये स्पेशल स्टेटस आज का थोड़ा, ये महाराजा जी के टाइम का है। और क्यों था? जब महाराजा ने ये रियासत ली, उन्होंने खरीदी, उसमें हमारी जो रियासत थी गरीब थी और जो हमारे पड़ोसी स्टेटें थी, जो राज्य थे, वहां पे लोग अमीर थे। और महाराजा साहब ने सोचा कि जब मेरे लोग गरीब हैं, अगर ये बाहर के जो अमीर स्टेटें हैं वो मेरे लोगों की जमीनें भी खरीद लेंगे, मेरे बच्चों का रोजगार भी ले लेंगे, तो इसलिए उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस हमें दिया था। तो लिहाजा जो आज बीजेपी कर रही है, अगर आप सही मैंने इनके दिल का नार्को टच कराएं, ये भी दिल्ली से चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान इसमें जम्मू को हुआ है। जम्मू के लोगों को जितना नुकसान हुआ है इतना कश्मीर में नहीं हुआ, क्योंकि वहां जमीनें भी बाहर के लोग ले रहे हैं, वहां आपका रोजगार
रोजगार भी बाहर के लोग ले रहे हैं, वहाँ जो आपकी माइनिंग है, दरिया खाली हो गए हैं, बाहर के लोग लेके जा रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री की जमीनें बाहर के लोग लेके चले गए, आपकी जो यहाँ वाइन शॉप जो पॉलिसी चली है, हमारे लोगों की, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दुकानें होती थी, आज उनको दुकानें कैंसिल करके आज उन्होंने बाहर के लोगों को दे दिया, तो जम्मू कश्मीर के पास बचा क्या? तो इसलिए जम्मू कश्मीर हम आज अगर देखें, बीजेपी अगर दिल्ली में सरकार चला रही है, नीतीश कुमार जी को साथ क्यों लेके चल रहे हैं? उनको भी तो ये वादा किया है कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे, चंद्रबाबू नायडू को भी यही वादा है कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे, हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है, उसको स्पेशल स्टेटस। तो इसलिए यहाँ भगवान राम जी का मतलब नहीं है, भगवान राम जी मेरे भी राम, उनके भी राम, आपके भी राम, सबके राम, भगवान एक है। तो अगर भगवान राम जी हैं, तो अगर ये भगवान राम जी का नाम लेके ही नारे लगाएं, तो मैं इनको कहूंगा कि भगवान राम जी क्या कहते थे, सबको, भगवान राम जी का जो राज्य था उसमें हर आदमी को हर सुख था, कोई जात बरादरी मजहब फिरका प्रस्ती नहीं थी। तो इसलिए कहूंगा हम भी आज क्या कह रहे हैं, हम भी भगवान राम जी के रास्ते पे चलकर उनको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो हक है, वो स्टेट है, हमारा स्पेशल स्टेटस है, वो हमें मिलना चाहिए। देखिए मैंने कहा ना, इनकाउंटर अलग बात है, आप इस मिलिटेंट्स को मत इन्वॉल्व करिए ना इसके साथ, मिलिटेंसी अलग चीज है। ये आप 6 साल से यहाँ पे गवर्नर रूल था, तो मिलिटेंसी खत्म हो गई। रिजौरी खित्ता पीर पंचाल के अंदर कितना टाइम है, खित्ता पीर पंचाल से आता हूँ, क्या वहां खत्म हो गई? That is all we have for now. For the latest news and updates, keep watching Hornbill TV.